नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारतीय विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस वार्ता में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पश्चिम एशिया की बिगड़ती स्थिति, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों, विशेषकर मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया से संबंधित सवालों के जवाब तो दिए ही, साथ ही भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित और अन्य वैश्विक मुद्दों पर आधारित विभिन्न प्रश्नों के उत्तर भी दिए। आइए देखते हैं विस्तृत प्रेस वार्ता। आपका सवाल पहले आपने कहा कि आसियान के मंच से बहुत सारी बातें कही गई। उसके बाद आपने देखा होगा कि हम लोगों ने अपना स्पष्टीकरण और बयान जारी किया गया, जिसमें जो मुद्दे पर वहाँ पर उसको उठाया गया उसको हमने खंडन किया है, और साथ ही साथ जो अपने फितना अल हिंदुस्तान की बात कही उस पर भी हम लोगों ने अपनी विज्ञप्ति में अपना पक्ष रखा है। किस प्रकार से पाकिस्तान एक धार्मिक ढांचा हर चीज़ को पहनाकर अपनी प्रोपेगेंडा को आगे ले जाना चाहता है। और जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी की बात है, सिंधु जल संधि की समझौते की बात है, इस पर हमारा पक्ष साफ है। और हम लोगों ने समय समय पर आपको याद भी दिलाया है कि भारत का ये कहना है, ये मानना है कि ये सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगा, अबेंस में रहेगा, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं करेगा। The ASEAN forum was utilized by Pakistan to make certain remarks. On that, we have made categorical rejections of the issues raised through our press release. You would have seen our statement. On Indus water treaties, our statement or our position remains unchanged and very clear. Indus water treaty is or remains in abeyance until Pakistan irrevocably and credibly abjures its support for cross-border terrorism. He also, मधु, आपने कहा, बात आपने उठाई कि फॉरेन फंडिंग वगैरह की बात जो आपने कही, जो प्रदर्शन चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास इस मसले पर किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन आपसे साझा करने के लिए नहीं है। Siddhant, your question regarding sovereignty issue, let me say that yes, External Affairs Minister said that when it comes to sovereignty issues, it is actually India that should be and is raising them. India does not violate China's sovereignty in any manner and has been consistent, but China is in illegal occupation of Indian territories in Jammu and Kashmir and Ladakh since 1963, where India's right is officially acknowledged even by China. Also, there are Chinese projects on territories in Jammu and Kashmir that belong to India, and we object to that. पाकिस्तान मीडिया का यह आरोप कि भारत जानबूझकर पानी छोड़कर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, यह पूरी तरह से गलत है, निराधार है। 20 से 23 जुलाई के बीच में चिनाब नदी के बहाव में जो वृद्धि आया है, वह जम्मू और आसपास के इलाके में जो भारी बारिश हुई है उसका नतीजा है। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की अपने बाढ़ पूर्वानुमान प्रभाग या विभाग जो लाहौर में स्थित है, उसने 22 जुलाई को जारी अपनी बाढ़ चेतावनी में चिनाब नदी में बाढ़ के ऊंचे स्तर का कारण ऊपरी जल क्षेत्र में भारी बारिश को बताया था। इसमें यह भी कहा गया था कि मराला में पानी का तेज बहाव बना रहेगा और बारिश कम होने पर यह धीरे धीरे घटेगा। इसलिए नदी में बहाव में यह वृद्धि भारी मानसून बारिश की एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, न कि भारत द्वारा जानबूझकर उठाए गए कदम का नतीजा। मानसून की वजह से आई बाढ़ की यह घटना को ऊपरी क्षेत्र से की गई छेड़छाड़ के रूप में पेश करने की कोशिश बिल्कुल गलत है और तकनीकी रूप से आधारहीन है। यह पाकिस्तान की अपनी आधिकारिक बाढ़
चेतावनी के भी खिलाफ है। जहां तक बाढ़ की चेतावनी न देने की आरोप का सवाल है, इस दौरान नदी का बहाव एक ऐसे असाधारण स्तर तक नहीं पहुंचा था जिसके लिए कोई विशेष चेतावनी जारी करने की ज़रूरत पड़े। पानी का यह बहाव ऊपरी जल क्षेत्रों यानी कि अपर कैचमेंट एरिया में मौजूद मानसून हालात के बिल्कुल अनुरूप था, जिसे पाकिस्तान के अपने बाढ़ पूर्वानुमान अधिकारियों ने भी माना है। इसलिए यह कहना कि भारत ने जानबूझकर बाढ़ से जुड़ी जानकारी छिपाई, यह पूरी तरह निराधार है। इसके बावजूद पिछले साल की तरह जब भी ऐसी स्थिति आएगी, भारत मानवीय आधार पर डिप्लोमेटिक माध्यमों से, चैनल से पाकिस्तान के साथ बाढ़ के आंकड़े साझा करता रहेगा। Akansha, on your question about the latest attack that you said that has happened, I guess it has just happened, so we will have to check with our authorities, the Ministry of Shipping, as also our embassy, and get you more updates on this particular matter. Rishabh, on this drone attack as well, we made a statement. We called in the Russian CDA here and lodged a strong protest when 4 Indian nationals were killed who were on board MV Golden Leo next to the port of Odessa. After that, we continue to follow that particular case, but this one is a new one, and we'll have to get back to you as to what exactly is the situation there. Uma, sorry. On Bangladesh, yes, we have seen that a new officer has been, we have been informed that a new officer has been posted, and we look forward to working with the High Commission here to take our ties forward. Let me first go over these questions. Huma, first, the number of people. I don't have an exact number here, but I think a month or little more back you had asked me about those details and I had given you. So I will keep you updated with the numbers that we have on our side. I don't have a date to share on the India-Africa summit. You know the circumstances under which this was postponed. So, but we shall keep you updated. Keshav, on your question regarding what the ship was carrying. So let me tell you that as far as, or as per the information that was made available to us by the Directorate General of Maritime Administration of our country, this particular ship, Golden Leo, which, as you know, there was Guinea-Bissau flagged, and on which we lost 4 of our nationals. It loaded grain as cargo prior to leaving the port of Odessa, and this happened on 19th July. We once again reiterate that commercial shipping and seafarers should not be attacked under any circumstances. And I must add that EM had made this position clear in the East Asia Summit and the ARF meetings that were recently held, and also reiterated our position and our points with Russian Foreign Minister Lavrov in Manila. On the other question on the number of people being deported from UAE, I don't know the exact details as to why it has happened, but I can come back to you. But as you know that we have a large number of Indian community members who reside in UAE. We also have a large tourist flow between the two countries. So given the size of our diaspora, size of our people-to-people engagement, such numbers are sometimes on the higher side. But I'll get back to you exactly what is the reason for these detention or deportation. Ayushi, your question about National Security Advisor's visit to Riyadh. We keep having these conversations with our partner countries, and it was the National Security Advisor's visit to Riyadh was also in that context to take our regular conversations forward. Some of the issues that you flagged were discussed, and we hope to continue to build our relationship with Saudi Arabia through the dialogue mechanism that we have between the NSAs on both sides.
On your question about the Prime Minister of Bangladesh invitation, let me come back to you on that later. ब्रह्म प्रकाश जी, आपका सवाल है कि जो सवाल आपने पूछा कि बहुत सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं जो ऐसा कहा जा रहा है, जैसा आप बता रहे हैं कि किसी और जगह से वो चल रहे हैं, तो इसके बारे में मेरे पास अभी जानकारी नहीं है, पुख्ता जानकारी कि किस प्रकार का सोशल मीडिया में कौन चीज़ कहाँ से आ रहा है। लेकिन जो हमारे एजेंसीज़ हैं, जो हमारे इस मुद्दे से जुड़े जो भी हमारे संस्थाएं हैं, उस पर नज़र रखे हुए हैं। फिर आपने बात कही, खाने की बात कही, इस पर भी मेरे पास जानकारी नहीं है कि कौन सा खाना मतलब अमेज़न से या कोई और चैनल से कहाँ से ऑर्डर किया गया, ये मेरे पास नहीं है। लेकिन आप जैसे जानते हैं कि हमारे इन देशों में, बहुत सारे देशों में, दुबई में और संयुक्त अरब अमीरात में हमारे भारत के समुदाय के लोग रहते हैं, तो लेकिन हमारे पास कुछ साझा करने के लिए आपसे विशेष नहीं है इस पर। I mean, I don't have any information to share on this particular matter with you. There are relevant agencies in Government of India who keep track and keep a watch on these issues. On the ambassador of the United States visit, I don't have, again, I have not seen, we don't have any information on this particular. So first is, Akhilesh, we have made our position very clear that when it comes to the passage of commercial shipping, or when it comes to right of navigation, we continue to stress that it's important that right of navigation be allowed through international waterways as per international law. It's important for global shipping, it's important for economic security of the world, it's important for energy security of the global community. So that is how we look at the developments that you talked about in and around Bab el Mandeb. Shikha, your question, first question was about the 301. So let me say that this particular announcement came today morning, India time, in the morning. We have noted the announcement. This is 301 enforcement action, as you know, and initiated after the Supreme Court, the US Supreme Court ruling on the tariff issue, which came, I think, in February. We have made our position clear on this subject. Our talks on the bilateral trade agreement with the US side continues with a view to concluding the BTA at an early date. On your question regarding in a very unfortunate and tragic incident, an Indian national was badly injured in Utah. Our consulate has been keeping a close watch on this particular issue. We've also extended whatever help we could, and we are in touch with his family, with him and his friends. We've also seen the circumstances in which this particular violent act was committed, and we condemn that act. And we hope that the local authorities will investigate the matter and bring the culprit to justice, as also will ensure safety and security for our nationals in the United States and in Utah in particular. On the request of visa, etc., I'm sure our people are looking into it, and we'll try to do whatever best we can so that the welfare and well-being of our national who's been badly injured and he's receiving medical treatment, that is guaranteed. On the Oman issue, we have a large community in Oman, as also in several of our Gulf countries. Now we have consular issues, as and when we have these consular issues and conflicts, etc. The consulate or the embassy, as the case may be, we take up those issues very seriously, because for us the welfare of our community is of prime importance, and our mission will continue to extend all possible assistance in this particular matter. Kalol, to your question about the protests which have happened in Delhi, yes, the protests have happened over the last 3-4 days that you've seen. There are people who have had to say on those matters, and that is where I leave it.
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।